Assalamu alaikum. My name is Abiha Tariq and I'm a subject specialist at Tabir Academy. Tabir Academy की website पे you can find information about the topics that are included in MDCAT in the form of MCQs, exercises, notes and videos. So please head to Tabir Academy की website and find information and the notes that will be helpful for your preparation for MDCAT. Let's just start today's topic. आज का हमारा टॉपिक है दैट इज अल्काइल हैलाइड्स. इसके अंदर अल्काइल हैलाइड्स में विल बी डूइंग द क्लासिफिकेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स, नोमेनक्लेचर, हाउ डू वी नेम अल्काइल हैलाइड्स, इनकी रिएक्शंस क्या हैं, मैकेनिज्म क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का दैट इज SN1, SN2 एंड एलिमिनेशन रिएक्शन दैट इज E1 एंड E2. लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स का मतलब है जो आपके स्क्रीन पर लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स है. इट मींस बाय द एंड ऑफ द टॉपिक व्हेन यू थिंक दैट यू आर फुली प्रिपेयर्ड यू शुड बी एबल टू discuss the structure and reactivity of alkyl halides, describe the mechanism and types of nucleophilic substitution reaction, name alkyl halides using Iupac system. So these are the learning objectives. Let's just start. A haloalkane, also known as alkyl halogenide or halogenoalkane, these are the names of alkyl halide. Alkyl halide is a chemical compound जो derive करते हैं हम लोग by substituting the hydrogen in alkane with halogen. जो halogen atoms हैं they are present in the group 7 of the periodic table and इनके नाम है fluorine, chlorine, bromine and iodine. जो इनसे कंपाउंड बनते हैं they are called fluoroalkanes, chloroalkanes, bromoalkanes and iodoalkanes respectively. ऐसा कोई रूल नहीं है कि जस्ट एक अल्कीन के साथ एक ही हेलोजन एटम एसोसिएट हो सकता है, सब्स्टिट्यूट हो सकता है. तो समटाइम there are mixed compounds and the best example is chlorofluorocarbon, CFCs that are responsible for the ozone depletion. और कई दफा हमारे पास जो compounds होते हैं उसके अंदर the halogen is like there are 2 halogen atoms in the alkyl halide और तो या फिर 3 or 4 it depends. So उनका हम नाम देंगे mono, di, tri और polyhaloalkanes depending on the number of halogen atoms present in the molecule. The general formula of alkyl halides is RX. R represents methyl, ethyl and propyl and X is representing halogen atom that is fluorine, chlorine, bromine and iodine. उसके बाद हमारे पास है प्राइमरी अल्काइल हैलाइड. प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स वो होते हैं जिनके अंदर हेलोजन एटम उस कार्बन एटम के साथ कंबाइन होता है जिसके साथ आइदर देयर विल बी वन कार्बन एटम और देयर विल बी नो कार्बन एटम. फॉर एग्जांपल यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं हम. दिस इज कार्बन एटम, दिस इज अटैच्ड टू क्लोरीन एंड यहाँ पे इसके साथ hydrogens attached. So there are no other carbon atoms directly attached to it, or there will be one, like in ethyl chloride and in propyl chloride. Secondary alkyl halides में जो हमारे पास halogen atom होता है वो उस carbon atom के साथ attached होता है जिसके साथ further 2 carbon atoms are directly attached. और tertiary में जो carbon atom के साथ halogen attached होता है उसके साथ 3 carbon atoms should be attached directly. नेक्स्ट हमारे पास है Iupac nomenclature of alkyl halides. इसके अंदर we have to select the longest continuous carbon chain और फिर उसको कंसीडर करेंगे हम कंपाउंड कि कंपाउंड इस चेन से डिराइव किया है, स्ट्रक्चर अब इस चेन से बनेगा. इट कैन बी प्रोपाइल, इट कैन बी ब्यूटाइल, इट कैन बी पेंटेन, इट कैन बी मीथेन, इट कैन बी अल्केन. मतलब कुछ भी जो सबसे लॉन्गेस्ट चेन होगी ना कॉन्टिन्यूअस वो हम उसको कंसीडर करेंगे. उसके बाद है वी आर गोइंग टू नंबर द कार्बन एटम्स एंड जो सबसे लोएस्ट नंबर है वो हम देंगे उस कार्बन एटम को जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप दैट इज अ हेलोजन इज अटैच्ड. इफ द सेम अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट occurs more than once on the chain, ये पूरी चेन की बात हो रही है, तो फिर हम प्रीफिक्स डाई ट्राई ऐड करेंगे नेम में. अगर तो पोजीशन अगर तो सेम सब्स्टिट्यूशन जौन सा है दैट occurs twice or more on the same carbon, तो फिर हम नंबर रिपीट करते हैं. Why I am saying कि नंबर रिपीट करते हैं? The position of the substituents are indicated by the appropriate numbers separated by commas. ठीक है, तो फिर अगर एक ही कार्बन एटम के ऊपर जो सब्स्टिट्यूएंट है वो ट्वाइस और मोर देन दैट है तो फिर हम उस नंबर को रिपीट करेंगे. लेकिन अगर जो सा सेम सब्स्टिट्यूएंट है दैट इज अकरिंग मोर देन वंस इन द कंप्लीट चेन तो फिर हम डाई ट्राई को करेंगे. सो प्लीज डोंट कंफ्यूज दीज टू postulates. Preparation of alkyl halides is done by free radical halogenation. इसके अंदर रेडिकल्स बनते हैं और सब्स्टिट्यूशन होती जाती है अल्कीन के अंदर हेलोजेंस की और हाइड्रोजन एटम्स जो से हैं वो रिप्लेस होते जाते हैं. सबसे पहला हमारा स्टेप है वो है आपके सामने दैट इज दिस इज द हेलोजन मॉलिक्यूल द X2
और फिर वो जो सा है वो डायटोमिक हेलोजन मॉलिक्यूल जो सा है वो कन्वर्ट हो गया है रेडिकल के अंदर। फिर जो ये रेडिकल है इसने रिएक्ट किया अल्कीन के साथ, हमारे पास ये रेडिकल आ गया और हमारे पास दिस कैन बी लाइक HCl, इट कैन बी HF, इट कैन बी HI। दिस इज कॉल्ड द फर्स्ट प्रोपगेशन स्टेप। उसके बाद हमारे पास जो थर्ड स्टेप है दैट इज कॉल्ड द सेकंड प्रोपगेशन स्टेप। नाउ इफ यू सी क्लियरली वी आर गेटिंग अल्काइल हैलाइड इन द third step. Steps 2 and step 3 keep repeating, each providing the reactive intermediate needed for the other step. This is called radical chain reaction. This reaction continues until the radicals are used up by one of three termination steps. अब पहले हमने propagation step देखे हैं, अब हम termination steps को देखेंगे. So this is the first termination step. ठीक है, इसके अंदर भी if you see first termination step के अंदर what are we getting? We are getting an alkyl halide. This is the second termination step. इसके अंदर हम हेलोजन का मॉलिक्यूल मिल रहा है डायटोमिक, और फिर उसके बाद हमारे पास इज द थर्ड टर्मिनेशन स्टेप. नाउ प्लीज नोट कि स्टेप 4 रिजल्ट्स इन द सेम प्रोडक्ट एज स्टेप 3. स्टेप 4 में भी अल्काइल हैलाइड मिला और स्टेप 3 में भी हमें अल्काइल हैलाइड मिला, बट थ्रू द डिस्ट्रक्शन ऑफ 2 रेडिकल्स. Step 5 is just the reverse of step 1, and step 6 accounts for small contamination of this reaction by larger alkenes and their subsequent haloalkanes. अब preparation of alcohols, preparation of alkyl halides. अल्काइल हैलाइड्स की प्रिपरेशन का सबसे बेस्ट मेथड क्या है? दैट इज फ्रॉम अल्कोहल. टर्शियरी अल्कनोल रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड डायरेक्टली टू प्रोड्यूस टर्शियरी क्लोरोअल्केन, दैट इज अ alkyl halide. But if primary and secondary alkanol is used, an activator must be used as well. वो activator zinc chloride भी हो सकता है. Alternatively, the conversion may be performed directly using thionyl chloride, that is SOCl2. Alkanol may likewise be converted to bromoalkane using hydrobromic acid or phosphorus tribromide, or iodoalkane using red phosphorus and iodine equivalent to phosphorus triiodine. हमारे पास जो example है उसके अंदर you can see कि this is the example. This compound is tertiary butanol. It is reacting with hydrochloric acid and this is producing tertiary butyl chloride and water molecule. This compound is called 1-heptanol and this is combining with thionyl chloride and ये हमारे पास एक alkyl halide बन रहा है, sulfur dioxide and HCl. Now let's move forward to nucleophilic substitution reaction. जो reactions हैं alkyl halides के. nucleophile क्या होता है? Phile means to attract, to love something. So electrophile, nucleophile. Electron means electron loving, nucleophile means positive charge loving. So it is a species which attracts electrons. It is an electron loving species. It can be an ion, it can be a molecule, it can be an atom. The carbon atom of an alkyl group attached with the halogen atom and bearing a partial positive charge is called an electrophile or electrophilic center. Electrophilic है, it is loving the electrons, so it will be either neutral or it will be either positively charged because opposites attract each other. Leaving group में हमारे पास आया है nucleophile. It is called leaving group because it departs with an unshared pair of electrons. Poor leaving groups are these OH minus, OR minus and NH2 minus. और जो iodide ion है that is a good nucleophile as well as a good leaving group. अब हमारे पास आते हैं सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल. वो मॉलिक्यूल जहां पे न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करना होता है या जहां पे अटैच होता है दैट इज कॉल्ड अ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल. हमारे पास दो रिएक्शन है SN1 एंड SN2. लेट्स जस्ट डिस्कस SN1 फर्स्ट. सबसे पहले SN1 इज कंप्लीटेड इन 2 स्टेप्स. इसका जो फर्स्ट स्टेप होता है दैट इज स्लो, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड रेट डिटरमाइनिंग स्टेप. उसके बाद the rate of SN1 reaction depends on concentration of alkyl halides only. Intermediate is formed, that is a carbocation. Carbocation वो कार्बन है जिसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज होता है and it is attached to 3 bonds. This is a positive charge and it is attached to 3 more atoms. Racemic mixture बनता है. Racemic mixture का मतलब है this is a mixture of 2 equal quantities of a substance, or you can say enantiomers that have dissymmetric molecular structure. Enantiomers क्या होते हैं? Enantiomers are optical isomers of each other. Order of reactivity कैसे increase होता है? जितना degree of substitution ज्यादा होता है, जितना हम add कर सकते हैं उतना order of reactivity increase होता है. So tertiary alkyl halides are more reactive than secondary alkyl halides, and secondary are more reactive than primary alkyl halides. Now let's move to SN2. There are no 2 steps. There is just one single step. उसके बाद the rate depends on alkyl halide and alkali.
only transition state appears, no intermediate is formed. Walden inversion takes place. Walden inversion is inversion of chiral center in a molecule. जो molecule में chiral center होता है उसकी inversion को कहते हैं Walden inversion. Order of reactivity is opposite here. यहाँ पे tertiary alkyl halides are less reactive than secondary and secondary alkyl halides are less reactive than primary alkyl halides. ये आपके सामने डायग्राम है SN1 रिएक्शन की. ये 2 स्टेप्स होते हैं और SN2 जो सा है दैट इज अ सिंगल स्टेप. अब हमारे पास आगे हैं एलिमिनेशन रिएक्शन. एलिमिनेशन रिएक्शन इज ड्यूरिंग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. हमने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में पढ़ा कि द अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल अटैक्स द इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है. बट देयर इज वन मोर साइट प्रेजेंट जहां पे जो न्यूक्लियोफाइल है दैट कैन अटैक. दैट प्लेस इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोफिलिक हाइड्रोजन एटम. हाइड्रोजन, ये कौन सा हाइड्रोजन एटम है? ये वो हाइड्रोजन एटम है दैट इज अटैच्ड टू द बीटा कार्बन ऑफ द अल्काइल हैलाइड. जब न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक करता है ऑन दिस हाइड्रोजन इंस्टेड ऑफ दैट इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन एटम, तो फिर हमारे पास सब्स्टिट्यूट रिएक्शन नहीं होता, फिर हमारे पास एलिमिनेशन रिएक्शन होता है. एंड द प्रोडक्ट दैट वी गेट इज एन अल्कीन. डबल बॉन्ड आ गई. There are 2 types of elimination reactions. One is E1 and the other is E2. The rate of both reaction increases with the degree of substitution. Primary substrate gives only an E2 reaction with no carbocation. E2 reactions carry out in the presence of strong base, while E1 reactions take place in the presence of weak base. उसके बाद हमारे पास ये आपके सामने मैकेनिज्म दिया गया है E1 रिएक्शन का भी और E2 रिएक्शन का भी. Now what is word synthesis? Word synthesis is alkyl halides जब हमें चाहिए होते हैं क्या alkyl halides react with sodium in ether solvent to give alkenes. ये हम कब रिएक्शन करते हैं? जब हमें symmetrical alkenes चाहिए होते हैं, तब हम word synthesis करते हैं. उसके अलावा alkyl halides के रिएक्शन में है reduction of alkyl halides. Alkyl halides can be reduced by nascent hydrogen. Nascent hydrogen is reactive, more reactive than the molecule of hydrogen. It can be generated by zinc hydrochloric acid or zinc copper couple and alcohol. Now, what is Grignard reagent? Grignard reagent is a very important compound in chemistry. Why? We'll see about that. Grignard reagent, that is RMGX, it is the formula, general formula, are derivatives of alkyl halides belonging to a class of organometallic compounds. These reagents are so important. Why they are so important? Because almost all the classes of organic compounds can be prepared from them. Grignard reagents are prepared by the reaction of magnesium metal with alkyl halides in the presence of dry ether. Dry ether matlab they will be alcohol free and there will be moisture free as well. So reactivity of alkyl halides with magnesium is in the following order. यहाँ पे किसी specific alkyl halide की बात नहीं हो रही, यहाँ पे normal generally alkyl halides की बात हो रही है. So सबसे पहले कौन सा alkyl halide जो सा है that is more reactive? Iodide, then alkyl bromide, and then at the last alkyl chloride. अब अगर एक given halogen की बात हो तो order of reactivity is CH3X and then C2H5X and then C3H7X. So that is all for alkyl halides. I hope you understand each and everything and best of luck for this chapter. Please head to the Abir Academy ki website and test your knowledge by doing their exercises and MCQs.